فائدہ ہوا ہوگا, بہت سارے لوگوں کے ذہن میں جو اشکالات اور سوالات ہوں گے ان کی وضاحت ہو گئی ہوگی. اب یہ ہے کہ ہم اپنا پینل ڈسکشن شروع کرتے ہیں جس میں بہت سارے سوالات ہم نے پہلے سے تیار کیے ہوئے جو لوگوں نے ہم سے کیے یا ہمارے ذہن میں آئے اور میڈیا میں بھی ادھر ادھر گردش کر رہے ہیں. پہلے ان کو لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کے جو سوالات ہیں اس کو مرتب کر کے چلیں گے. اس میں سے ہو سکتا ہے کہ کافی سوالات ویسے ہی کور ہو جائیں, جو رہ گئے ہوں گے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے. میں ذرا سلائڈ شیئر کر لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ ویکسین کے نتیجے میں کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں, لیکن یہ کچھ خبریں آئی ہیں کہ کچھ اموات بھی ہوئی ہیں. اس کے بارے میں ہمارے احباب کیا کہتے ہیں کہ اگر اس سے موت بھی ہو رہی ہے تو سیریس مسئلہ ہے. جی خرم, کیا ارشاد فرمائیں؟ جی اصل میں یہ بالکل یہ ایک اہم چیز ہے. یہ ناروے کا خاص طور پہ کیس آئے تھے 23 ڈیتھس کے. تو اس میں دو چیزیں. ایک تو یہ کہ یہ پبلش ڈیٹا نہیں ہے, نیوز تھی, لیکن اس میں خاص چیز یہ تھی کہ ناروے میں یاد رہے کہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں وہاں پر یہ ریزیڈینشل ہوم کے رہنے والے افراد تھے, تو ان میں مورٹیلٹی آلریڈی بہت زیادہ ہائی ہے. اور وہاں پر جو ایج ہے, ایوریج ایج, وہ غالباً 83 سے 84 سال ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز میں سب سے ہائی مطلب ایج گروپ کے لوگ رہتے ہیں. تو وہاں پر اس طرح کی خبر آئی, تو اس میں ویریفیکیشن ابھی تک پہلی بات کہ ہو نہیں سکی کہ ڈائریکٹ کازل ایسوسیشن تھی ویکسینیشن کے ساتھ یا نہیں تھی. تو بیکاز اٹ از ویری ان یوزول. انفیکٹ جو ڈیٹا آ رہا ہے بہت سارا باہر, آپ اس میں غور کیجئے کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ آ رہی ہے کہ جو 55 سال سے اوپر کے حضرات یا خواتین ہیں ان کے اندر جو الرجک ریئیکشن ہے وہ بھی کم ہے, کانٹریری ٹو جو کہ سمجھا جا رہا تھا. تو بلکہ جو جتنے الرجک ریئیکشن کے کیسز آئے ہیں وہ عام طور پہ 55 سے کم عمر کے افراد ہیں. میرے خیال میں یہ اس کو ڈیٹر نہیں کرنا چاہیے ہمیں ویکسینیشن کو لینے سے. یہ صرف ایک آئسولیٹڈ نیوز ہے. ظاہر ہے کہ الرجک ریئیکشن کا خطرہ ہے اور وہ ہر جگہ بتایا گیا اور اس سے اویئرنیس ہونی چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ نیوز تھوڑی ڈسپرپورشنیٹ ہے ٹو واٹ وی آر سیئنگ. جزاک اللہ. کوئی اور صاحب اس میں کچھ کہنا چاہیں تو اختیار پینل میں سے. یعنی خلاصہ یہ کہ وہ بہت ہی ضعیف اور کمزور لوگ تھے, ان کے لیے وہ مائل اگر ریئیکشن بھی تھا تو ہو سکتا تھا کہ وہ بھی گرتی ہوئی دیوار کے لیے ایک دھکا ہی ثابت ہوا ہو. یہ بھی ایک ممکن امکان اس کا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جیسا ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ یہ پبلش ڈیٹا اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کو ویریفائی کیا جائے. یقیناً ہے تو, لیکن یہ ہے کہ اس کی تفصیلات مزید جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا اسی ویکسین سے ہوا یا اور کچھ وجوہات بھی رہی ہو. Yeah, and I'd like to add, I totally agree with what was just said, but what we have to remember is the vaccination and no medication is without risk, okay? But the risk of the virus itself in the elderly population, in the patients who have chronic diseases, is much, much, much higher than the risk of the vaccine. So you have to, if you look at a risk benefit for any medication, any vaccine, we need to consider that. And the risk benefit is way in favor of the vaccine compared to Khula na khas catching COVID-19. جزاک اللہ خیر. اور اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ 23 کی 23 جو ہے ایک جگہ پہ نہیں ہوئی کہ ایک ہی جگہ لوگوں کو دیا گیا اور سارے کے سارے ایک ساتھ فارغ ہو گئے. تو یہ بھی ذرا ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک ہی جگہ ہوا ہو تو اس سے ذرا زیادہ سنسنی پھیلتی ہے. یہ پورے ایک ملک میں یا علاقے میں مختلف جگہوں پہ یہ بات ہے. اچھا, اگلا سوال یہ ہے کہ جب انفیکشن ہم کو ہوتا ہے, کسی کو بھی ہوتا ہے, مجھے ریسنٹلی ہوا, اوروں کو بھی ہوا, خرم کو پچھلے سال ہو گیا تھا, آپ میں سے بھی کئی کو ہوا ہوگا, تو اس کے نتیجے میں تو اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ جسم میں اینٹی باڈیز ہو جائے, اور وہ بن جاتی ہیں. تو جب خود وائرس نے ہی اینٹی باڈیز بنا دی ہیں تو الگ سے ویکسین دینے کی کیا ضرورت ہے جب اس سے ریکور ہو گئے؟ تو ہمارے اگر وائرولوجسٹ پہلے اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. شکریہ, thank you very much. Okay, I think this is more relevant to an immunology topic. However, what I can just add is natural infection. Hey, the immunology is so vast, and so there are so many unknowns in immunology. We do not understand how a natural infection elicits antibodies, and sometimes a natural infection, we know, the experts agree that a natural infection can mask antibody production, both whether it is a B cell or T cell immune response. When somebody gets an infection,
Of course, there might be some kind of an antibody response, but there's no guarantee on that. But what we know for sure from the Pfizer and the Moderna and the AstraZeneca trials involving more than 100,000 patients in between those three studies is that, as a matter of fact, we know that a vaccine elicits the T help germinal centers and it boosts the immune response. So that's the very idea of the vaccine. So the general recommendation is that even if there is an infection, we would still encourage, strongly advise to get the vaccination. यूसुफ साहब आप क्या फरमाते हैं? So I agree, and there's some data that my colleagues here who've been studying coronaviruses from even before COVID-19 is that the antibody response seems to be relatively transient and not necessarily long-lasting. So even if you have a natural infection, you may get antibodies that are transient, but may not give you long-term protection. So I think even if someone has had an infection and had antibodies, say, a year ago, they should still be vaccinated. Now, one area where there's a little bit of doubt, and inshallah there will be more data which will satisfy this doubt, is the question is, suppose someone had an acute severe COVID infection at the beginning of 2021, and someone offers them the vaccine now, should they take it? That is a slightly more dubious area because they may have very high levels of natural antibodies. And so two issues. One is the vaccine may not produce a sustained effect because they already have high antibodies. And second, could there be a high risk of an infection, of a vaccine reaction? So maybe in that scenario, one should delay a little bit. But in general, if someone has an infection in the distant past, the coronavirus immunity is not sustained after natural infection, so we should still be vaccinated. जज़ाकल्लाह। खुरम आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बस मुख्तसरन ये बिल्कुल पहले जावेद भाई और यूसुफ भाई ने माशाल्लाह डिटेल में कह दिया, लेकिन ये एक रीसेंट स्टडी थी, उसके अंदर ये था कि जो नेचुरल इम्यूनिटी थी वो तकरीबन कह रहे थे कि 5 महीने तक ऑन एवरेज, मीडियन उसका 5 मंथ्स था। तो दैट ऑल्सो टेल्स यू कि मतलब इम्यूनिटी इसकी टेम्पररी है जनरली। ऑब्वियसली वो एक इशू जो भी इम्यूनिटी, अगेन यूसुफ भाई वुड नो मच बेटर देन मी, लेकिन एक इशू ये है कि टी सेल इम्यूनिटी को काउंट करने के इस वक्त जो है कोई मौसर तरीके नहीं हैं। आपकी जो एंटीबॉडी एसेज हैं वो रिलाई करते हैं आपकी इनिशियल इम्यून, जो आपकी जो इम्यूनिटी है बी सेल रिलेटेड, उसको काउंट करने का तरीका, और वो भी सारे एसेज जो हैं उनमें आपस में भी फ़र्क है। तो आई थिंक बॉटम लाइन ये है कि इस वक्त जो एक्सपर्ट ओपिनियन है आम पब्लिक के लिए, मैं ये कहूँगा कि वो ज़रूरी है कि वो उस एक्सपर्ट ओपिनियन को ट्रस्ट करें और उसके ऊपर जाएं कि वैक्सीनेशन की रिकमेंडेशन इस वक्त ये है कि जिसको एक्यूट इन्फेक्शन भी हो तो 4 हफ्ते के बाद, यूके में करंट रिकमेंडेशन है कि 4 हफ्ते के बाद दे कैन टेक द वैक्सीनेशन। जज़ाकल्लाह खैर। यानी इसमें एक पॉइंट ये भी ज़हन में रहना चाहिए कि जब वायरस आता है तो वायरस के, जैसे डॉक्टर साहब ने बताए थे ना, कितने सारे उसके पार्ट्स हैं, इतने सारे उसके मुख्तलिफ अज्जा हैं, तो पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसमें से हर एक के खिलाफ अटैक करता है, और हर एक उसमें से शायद हार्मफुल न भी हो, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके, पूरी अपनी जितनी भी दिफाई सलाहियत है चारों तरफ लगा दी। जबकि वैक्सीन जब आप देते हैं किसी को, तो हम सिर्फ वैक्सीन में से वही 2 प्रोटीन इस्तेमाल कर रहे हैं जो सबसे सही जगह हिट करती है और बॉडी जबरदस्त रिस्पॉन्स, यानी बहुत अच्छे तरीके से एंटीबॉडीज जो ज्यादा काम की है वो वाली पैदा करती, कह लीजिए, या ये कि सही मानों में पैदा करती, सारी बॉडी की गोया सलाहियतें उस जगह लग जाती हैं। तो ऐसा ये एक यानी ख्याल हो सकता है कि शायद वैक्सीनेशन के नतीजे में जो हमारा एंटीबॉडीज बनेंगी वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होंगी रिलेटिवली, और ज्यादा एफिशिएंट भी हो। तो एक ये थ्योरी है, देखते हैं कि कैसे चलता है। अभी अर्ली स्टेज है, जाहिर बात है, आप जानते हैं कि तो कई सालों तक इसका डेटा जमा होगा, सायरन स्टडी और ये सारी डॉक्टर्स पे जो हो रही हैं और बाकियों पर मुस्तकिल मॉनिटर हो रहा है हर बंदा, यानी जिन को वैक्सीन दी गई है, ताकि डॉक्टर्स में से भी स्पेशली कि क्या हो रहे हैं उनके इफेक्ट, उनके ब्लड टेस्ट वीकली कर रहे हैं कि एंटीबॉडीज, तो इससे वक्त के साथ इंशाल्लाह ताला बातें खुलेंगी। तो सारे 10 जैसा अभी सब अहबाब ने कहा कि जिनको इन्फेक्शन हुआ हो, कुछ एंटीबॉडीज बनी हो, वो यकीनन कुछ ना कुछ प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन कितने अरसे तक, 5 महीने 6 महीने या कम उसके बाद, तो आगे दोबारा ना हो इसलिए। और ये यानी ये अभी थ्योरी यही चल रही है, एक्सपर्ट्स का यही ख्याल है और इस पे यानी एतमाद करना चाहिए। जावेद साहब कुछ बोलना चाह रहे थे? Yeah, that's excellent. Thank you. I just want to give a piece of caution here. This should be anybody who has got a history of infection.
And when it comes for the vaccination, they should seek medical consultation at that time, because at the end of the day, it's a case-to-case variation. For example, somebody might be an elderly individual, or somebody might be on steroids, somebody might be immunosuppressed, and they might have cleared the infection. So the risk versus benefit in that is a benefit far outweighs for having the vaccination in that kind of an individual. And so it's, at the end of the day, I would say that individual needs to consult his medical practitioner. Thank you. हाँ, तो हमारे यानी ये खुलासा ये फरमा रहे हैं कि अगर आपकी तबीयत उस वक्त ठीक नहीं है वैक्सीन के वक्त, तो आप जरूर मशवरा करें अपने जीपी से, अपने डॉक्टर से, ताकि आपको असेस कर लिया जाए, क्योंकि अगर इन्फेक्शन वगैरह है तो उस वक्त वैक्सीन लगाना मुनासिब नहीं होगा। ये बहुत मारूफ सवाल है जिससे बहुत जहनों में ख्यालात आते हैं और इश्कालात आते हैं और शक व शुबा पैदा होता है कि इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे बन गई। इसमें तो 10-10 साल 20-20 साल आप लोगों को लगा करते थे, अब अचानक से ही आपने हफ्तों में, महीनों में 6-8 महीने लगाए और वैक्सीन तैयार। ये क्या चक्कर है? इसी ऑर्डर में अगर बारी बारी सारे अहबाब, बल्कि चारों अहबाब इसके बारे में कुछ कहना चाहें। Okay. The fact is that this vaccine was not created in 12 months or less than that. There have been scientists who have been involved in this production, or at least in the science behind it, for at least 3 decades. The mRNA vaccine was thought to be the best option initially, because you need a vaccine production at a massive scale. We are talking about billions of doses, and we need that in a real time when we are sitting in the middle of the pandemic. So we already had a basic knowledge of the mRNA vaccine, but unfortunately, there are good things which has happened in the last 1 year. The best thing is the mRNA vaccine. The mRNA vaccine couldn't get a green signal for so many years because there were lots of debates whether it could actually be safe or not. And on the background, we need to remember that there was already a MERS-CoV vaccine almost ready. So all the scientists at BioNTech had to do was take the genetic code, the code which codes for the spike protein, which are the 20 amino acids, put it on the mRNA, and this is all created in the laboratory. It's not obtained from any of the virus as such. So it's a kind of a technological know-how. It provides a platform where we can actually produce a vaccine in billions. And it has not, there have been no cutting corners. It has gone through its preclinical trial, found to be safe in animals. We have determined a dose, what is safe and efficacious in human beings. Then it's gone to phase 1 trial, which has been published, available in public domain. Then it has gone to phase 2. There has been overlapping between phase 1, phase 2, phase 3 trials, and that's natural when there is a demand to get a vaccine out. So the bottom line is the work behind the vaccine is not 10 months. It's been 3 to 4 decades. The other thing is that corners have not been cut, and even the kind of the mRNA vaccine here, alhamdulillah, is much better, because if you look at the other vaccines, they may have certain contents which may not be judicious for Muslims, but Allah has spared us the way for an mRNA vaccine where there are hardly 5 or 6 ingredients in it, more than 90-95% efficacious. That is like, we didn't even dream. Come October 2020, no one had thought that these vaccines would be more than 70% efficacious. It comes as a pleasant surprise that they are more than 90% efficacious. I'll leave it to the other two. Thank you. Yusuf bhai, aap kuch farmaiye. No, I think that Javed Bhai gave a very, very good answer. I think he's right. I mean, the resources that have been given to generate the progress in this vaccine has been huge, and it's because the whole world came to a standstill. So the resources that have been put to develop this vaccine in this short time has been tremendous, really. And I think that we've seen that, more than 100,000 individuals were vaccinated, and now obviously millions have been vaccinated. So there is a lot of data out there already, to be honest. I think if someone is offered the vaccine, and of course in the UK, only high-risk groups are going to be offered initially. I know if it was me and I was working in the UK still, I would take it myself.
جزاک اللہ. خرم آپ کچھ کہنا چاہتے ہوں تو؟ جی میں اس کو تھوڑا سا بالکل پہلے ہی بہت عمدہ بات کر دی گئی ہے. بس مختصر میں یہ کہوں گا جو میں نے پہلے اپنی سلائیڈ میں بھی بات کی تھی کہ جو اس کا جو پروسیس ہے نا اس میں 3 مین چیزیں ہیں. دیکھیں سائنس ہے کسی بھی ٹرائل کے اندر. جاوید بھائی نے بہت اور یوسف بھائی نے ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مہینے 2 مہینے میں سال کے اندر ہو گیا ہے. سائنس تو بہت پہلے سے چل رہی ہے. وائرسز کی نالج پبلک ڈومین میں ہے, سائنٹیفک سوسائٹی کے اندر ہے, وہ چل رہی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں اس کے اندر پارٹیسپینٹس یا سبجیکٹس. تو وہاں سب سے بڑا ڈفرینس آیا ہے. دیکھیں یہ ایک سائنٹیفک کمیونٹی کے لیے نا ایک سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس ٹرائل پہلے سیٹ اپ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. ہم بھی جو آنکولوجی ٹرائلز کرتے ہیں سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیشنٹس ہوں یا سبجیکٹس ہوں جن کے اندر یہ ایکسپیریمنٹ کر کے ریزلٹس نکالے جا سکیں. تو اس میں آپ دیکھیے اتنی بڑی ایک اللہ کی طرف سے مطلب جو چیلنج آیا ہے اس میں ایک اپرچونٹی بھی تھی. اپرچونٹی یہ تھی کہ لاکھوں پیشنٹ آپ ہزاروں پیشنٹ ریکروٹ کر سکتے ہیں, 40 ہزار پیشنٹ ریکروٹڈ ہیں. تو ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرنا اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے جتنے زیادہ سبجیکٹس ہوں ٹرائل کے اندر. تو آپ ورنہ اگر 100 لوگوں کا ٹرائل کر رہے ہو تو وہ ریلائبل نہیں ہوگا, ڈیٹا اسٹیٹسٹکلی روبسٹ نہیں ہوگا. پھر آخری چیز ہوتی ہے اس کی ریگولیٹری اپروولس میں آسانی ایک تو یہ ہو جاتی ہے کہ آلریڈی آپ کے پاس اسٹرانگ ڈیٹا ہے جو کہ یہاں پہ موجود تھا. اور دوسری آسانی جیسے میں نے کہا وہ یہ ہے کہ اس کو چونکہ اتنا بڑا اسکیل تھا ایشو کا تو انہوں نے اس کو چیزوں کو لاجسٹکس کو اوور آل جو ہے وہ فیسلٹیٹ بھی کیا کہ رادر دین کہ بیٹھے رہیں ایک ہی چیز کے اوپر. آپ سب نے یو کے میں جو رہتے ہیں دیکھا ہوگا کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی 3 4 مہینے ڈیلے ہو جاتا ہے. یہ ہر جگہ ہوتا ہے دنیا میں. تو یہاں پر انہوں نے ان چیزوں کو کٹ کر دیا کہ اسٹریٹ اوے گئی وہ ایتھکس کمیٹی میں ایک ہی جگہ اپروول ہو گیا اینڈ دے ایکٹیڈ ایکچولی کوائٹ فاسٹ ایز فار ایز ویکسینیشن از کنسرنڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے خیال ہے اس سے بہت وضاحت ہو گئی. مجھے ایمرجنسی میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیے اگر اچانک کسی کو دل کا دورہ پڑ جائے تو آپ ہاسپٹل جاتے ہیں تو سیکنڈوں میں آپ کو جو ہے وہ سائرن کے ساتھ لے جاتے ہیں اور اندر پہنچا دیتے ہیں, ورنہ آپ 4 گھنٹے اے میں ویٹ کرتے. تو ایمرجنسی میں تو بہرحال ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس پوری دنیا میں جب مسئلہ پیدا ہو گیا تو سب کو ہی اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا تھا, سب نے مل کے کوشش کی اور کوشش ایسے ہی کرنی چاہیے. تو ایمرجنسی کے حالات تو ایسے ہی ہوتے ہیں, ورنہ آپ مریض 6 مہینے ہمارے کمپلینٹ کرتے ہیں کہ میرا ہپ آپریشن رہ گیا اور ہو نہیں پا رہا NHS میں خاص طور سے, اور وہاں یہ کہ اچانک سے گری ہڈی ٹوٹی اگلے صبح جو ہے وہ آپریشن ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں بھی سامنے رہنی چاہیے. اور وہ ایبولا وائرس وغیرہ کا بھی جو سبسٹریٹ موجود تھا, گرین بک وغیرہ نے اس کی وضاحت کی کہ کیسا انہوں نے اس کو جو ہے پھر گویا سارے انگریڈینٹ سامان موجود تھا, انہوں نے اس کو بس تھوڑا سا شفٹ کیا ہے اور ساری چیزیں ایکسپیڈائٹ ہوئی ہیں الحمدللہ. ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں عافیت ہے. سوری کہ میں آگے نکل گیا. جی مفتی صاحب, کیا یہ کووڈ ویکسین حلال ہے؟ آپ نے بتایا کہ ابھی تک کسی میں کوئی ایسی چیز نہیں ملی, لیکن یہ کچھ لوگوں کا خیال جب تھا تو اس بارے میں آپ ایسے کہہ چکے ہیں, لیکن پھر بھی کوئی بات. جی ابھی تک جو ڈیٹا ملا ہے اور جو اس وقت پبلش ہوا ہے یا سامنے آیا ہے اس میں تو ایسا کوئی ایویڈنس نہیں آیا کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ جو کہ شرعی طور پر دین اسلام کے اندر منع ہو اور وہ اس میں شامل ہو. لیکن لیٹ سپوز اگر فیوچر میں کبھی ایسا ڈیٹا آ جائے تو ایکچولی پھر یہ ہوتا ہے کہ آلٹرنیٹیوز اویلیبل ہیں, کافی آلٹرنیٹیوز آ رہے ہیں, ابھی بھی ٹرائلز چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آلٹرنیٹیوز آ جائیں گے. تو پھر اگر لیٹ سپوز کسی میں پروو ہو جائے, سنی سنائی بات نہیں, جب وہ اسی کو ریپیٹ کروں گا کیونکہ اس میں جتنا انفیسائز کیا جائے وہ کم ہے, کہ سنی سنائی بات نہیں, ایکسپرٹس اگر اس کو ڈکلیئر کر دیں کہ ہاں اس کے اندر پروون ہے کہ یہ کوئی ایسا ایلیمنٹ شامل ہے جو دین اسلام کے اندر منع ہے, تو پھر آلٹرنیٹیوز کو دیکھا جائے گا. اور آلٹرنیٹیوز موجود ہیں تو ہوپ فلی ایسے ہی محسوس نہیں ہو رہا کہ ایسی کبھی صورت پیدا ہوگی کہ یہ صورت ہو جائے کہ ساری آپشنز جو ہیں سب کے اندر یہ ایلیمنٹ ہے, کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو دین اسلام میں منع ہے. تو ایسا محسوس فی الحال نہیں ہو رہا, اور جو ڈیٹا ہے اس میں بھی یہی سامنے ہے کہ ابھی تک ایسی ان ویکسینز کے اندر کوئی ایسا ایلیمنٹ شامل نہیں ہے. تو لیکن میں نے ذکر کر دیا کہ فیوچر میں کبھی ہو تو آلٹرنیٹیوز موجود ہیں, ان پہ شفٹ ہوا جا سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. جب کسی یہ ویکسینیشن کے بعد کیا انفیکشن ہونے کا خطرہ, یعنی کہ انفیکشن نہیں ہوگا, اس کا کوئی ایسا ڈیٹا موجود ہے؟ ویکسین کرا لی تو کووڈ انفیکشن نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو رہا ہے لوگوں کو یا ہوگا, اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیوں ہوتا ہے انفیکشن اس کے بعد؟ all the 3 trials, Pfizer, Moderna and AstraZeneca, their efficacy was the primary endpoint. And apart from testing for the neutralizing antibodies in AstraZeneca, the primary efficacy was preventing severe COVID-19. Okay. They did not actually look to see if the patient who has been immunized
has he still managed to get the infection, or is he able to transmit the infection? That has not been specifically looked at. However, Moderna did look at some of their patients, and there is some evidence that having the mRNA vaccine does prevent some amount of infection acquisition and thereby transmission. But this kind of data is still not sufficient enough to answer this question. What I would say is, as a word of caution, is until we get that robust evidence, we should still be behaving, we should not alter our behavior in terms of still face masking, still washing our hands, still maintaining social distance until we get the data out. The hope is, I think, once we have the data, because when you look at the concept of the vaccine, it does seem to suggest that the infection might be prevented, but I'm afraid we have to avoid that data to come out. It might take a couple of months. यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अगरचे इन्फेक्शन हो 5-10% जितने भी लोगों को, अगर सबको भी हो खुदा न खास्ता वैक्सीन के बाद, तब भी वो हल्का होगा, इतना शदीद नहीं होगा कि हॉस्पिटल जाना पड़े या आईसीयू जाना पड़े। तो गोया वैक्सीन से इसके बावजूद भी कि इन्फेक्शन होगा तब भी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जान बचेगी इंशाल्लाह ताला और हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाना पड़ेगा, घर में इलाज हो जाएगा, जो अक्सर का होता है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों की बात हो रही है कि जो यानी मौत हुई है, अभी बताया जैसे 22 लाख अमवात हो चुकी हैं आज की तारीख में, इससे ज्यादा। तो 22 लाख लोगों का दुनिया से उठ जाना ये मामूली नंबर नहीं है, तो इसलिए इसकी अहमियत बहरहाल है। और कोई साहब कोई इजाफा करना चाहें? I just add, Javed Bhai, what he said is absolutely right. I've seen quite a few people saying they got COVID infection after the vaccine. And this is not possible biologically. What is happening is, as soon as people are getting the vaccine, they're relaxing. They're saying, I've got the vaccine, I'm protected. They're stopping, taking the mask off. They're not physically distancing. So either what's happening is they are actually getting an infection, they're catching COVID, or in some cases they already had COVID and then they received the vaccine. And this also increases the risk of a vaccine reaction. So I've seen both of these events myself personally. So I would absolutely agree and reiterate what Javed Bhai is saying, is that until you've had the second dose, and even for some time after that, please do not stop wearing your mask. Please be careful. And if you're in any of those immunosuppressed groups, elderly or chronic disease, I would just carry out those other safety measures anyway, to be honest, because we don't know how effective it is in those groups. So I would still do those things, to be honest. इसका सवाल मुफ्ती साहब दे चुके हैं कि जो अल्कोहल इसमें होता है, बिल्कुल अहनाफ के नजदीक वो खजूर और अंगूर का नहीं होता और वो सिंथेटिक है, तो उसका इस्तेमाल जायज। अगर ये सवाल का जवाब भी हो चुका है कि आप मास्क वगैरह पहनते रहेंगे, उसी तरीके से सारे SOP फॉलो करेंगे, क्योंकि अभी भी बहरहाल इम्कान है, तो ये सारी एहतियाती तदाबीर जारी रखें जब तक कि इनफ डेटा ना आ जाए। इसमें काफी वक्त लग सकता है, साल 2 साल भी रख सकते हैं, जब तक आपको कहा ना जाए आप एहतियात कीजिए इंशाअल्लाह ताला और एतमाद से चलते रहिए। नॉर्मल लाइफ अभी नहीं होगी, वक्त लगेगा, इसका भी जवाब हो चुका है। क्या आप वैक्सीनेशन के बाद, यानी जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी, क्या वो अभी भी किसी को वायरस लगा सकते हैं? जी यूसुफ भाई। Javed Bhai, do you want to go first? Yeah, sorry, thanks. Again, I think it goes back to that similar answer. The thing is that it's our assumption, that's why I'm saying in inverted comma is assumption, is they are unlikely to be contagious. But we need to get robust data out that once vaccination also prevents infection. Well, all the 3 vaccines are designed to prevent severe COVID-19. There is a theoretical possibility at this time to say that, well, there's a possibility that they may get infection and they may transmit the infection. So that's why we are saying continue the same behavior. So, but however, like as I said earlier, the hope is that they are unlikely to be contagious. They're unlikely to have any transmissions. For this, we have to wait for some data to come out. इसमें सॉरी एक बात बस थोड़ी सी मैं ऐड कर दूं, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जावेद भाई, क्योंकि आज मैंने डेटा देखा कि नया डेटा आया, उसमें ये है कि जो नया वेरिएंट है वो 53% एसिम्प्टोमेटिक लोगों से आगे फैल रहा है।
तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो भी और दूसरा इसका एलिमेंट ये है कि जो भी वैक्सीन के ट्रायल का डेटा हम देख रहे हैं वो सारा बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हुआ है ड्यूरिंग द फर्स्ट लॉकडाउन, जब बहुत ही स्ट्रिक्ट मेयर्स थे, तो जो प्रिकॉशंस थी वो तो ली जा रही थी। तो बायोलॉजिकली आई कम्प्लीटली एग्री विद जावेद भाई कि होप यही है कि आप कंटेजियस नहीं रहेंगे इवेंचुअली, जब एक लार्जर स्केल पे पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो जाएगी। बट इनिशियल साइड पे अभी डेटा जो है वो बड़े डूबियस से हैं, क्योंकि पता नहीं है कि आपको अगर आप वायरस फॉर एग्जांपल एसिम्प्टोमेटिक, जैसे एक बात हो रही है कि वैक्सीन का एक फ़ायदा ये है कि अगर आपको इन्फेक्शन लग भी जाए, जो कि 5% या 8-10% को तो लग रहा है, even all three trials actually if you see the efficacy is 90 to 95%, so which means कि 5 से 10% लोग तो फिर भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो उन 5 से 10% लोगों में जब बड़ी पॉपुलेशन देखी जाएगी तो वो तो लाखों में बन जाएगी। तो अगर इतने सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स बन जाएंगे या वो एक माइल्ड इन्फेक्शन लेके फिर रहे होंगे, तो मुमकिन है कि वो अगर उनका इंटरेक्शन किसी ऐसे बंदे के साथ हो रहा है जो हाई रिस्क है, मोर ससेप्टेबल है, तो गालबन फिर से वही हो जाएगा, हम उसी स्केल में दोबारा से उसी साइकिल में फंस सकते हैं। एक क्विक सी चीज़ यहाँ पर मैंने देखा, एक बड़ा अच्छा सवाल किया हुआ है, ये डॉक्टर हैं हमारे कॉलीग हैं अवैस जलील, तो उन्होंने ये पूछा है, शायद इसके लिए यूसुफ भाई प्रॉब्ली विल बी इन बेस्ट पोजीशन टू आंसर दिस, कि इज देयर एनी पॉपुलेशन सब ग्रुप who may be at more risk from having vaccine and less risk from COVID on balance, as long-term side effect data are not known? I mean, this is a difficult one. I mean, the answer is there are certain groups about which we don't have any data. For example, none of the vaccines are licensed for children or for pregnant women, for example. So they're not licensed for those groups. We don't have any data on those groups. Now, of course, I mean, at the moment, the schools were probably a major transmission point. Kids don't necessarily get unwell with COVID, but they can certainly spread it. And that was probably something that was happening. So I think there's certain groups that we just don't know about. We don't vaccinate them. We don't have any data. My take on it is, if you're an adult and the license indication is there for you to have it, then you should have it. And if you're in a risk group, you should definitely have it. And again, there's two different sort of reactions that we talk about with vaccines. One is those reactions that occur immediately. And then there's some reactions which are more delayed, may take a few weeks. There's more immune mediated type reactions, for example, autoimmune type phenomena. But reactions that are taking years and years and years to develop, they are pretty uncommon and in many cases unproven. And so if people are worried about those very, very, very long latency type side effects, those are very, very difficult to prove, very, very, very rare. Certainly most things would have manifested by now because the first vaccines were given many months ago. So certainly immediate and medium term reactions we would have known about by now. So sorry, can I add something? I think it's an excellent piece of advice from Mr. Khan, and Dr. Karim is absolutely right about I just want to add something to that. It's speculative to assume that someone would have long-term vaccine side effects. No one gets an MMR vaccine, say in 2000, and that person gets a vaccine side effect in 2005. It's unheard of in the vaccine world. All the vaccine side effects have been observed within the 4 to 6 weeks, almost. I would say 99.99% of them have so far until now, they have been observed within 6 weeks of vaccination. And now we have 6 million individuals in UK alone who have been vaccinated. And we are not seeing any kind of major side effects. The other thing which I want to, Mr. Khan's very wise answer about this contagiousness. I want to add one thing for sure, and this is going to be the next thing in the horizon. Because of variants emerging, and variants are bound to emerge because it's an RNA virus, and there is a vaccine pressure as well. There will be tremendous pressure on the spike protein of the virus to change. So what is likely to happen? There will be a point coming at some point in the near future when the current vaccine, as we stand, may not be efficacious at all. There will be a stage, just like how we get a flu vaccine. But however, at that time, we already have a backbone for the vaccine. We don't need to do all this kind of trials. We just have to tweak the vaccine to
to the most prevalent strain, and then we can have the robust vaccine. So I just wanted to add that. There is a myth which is circulating that the mRNA can somehow get attached to the human chromosome, and then such individuals can have long-term side effects. Number one, the mRNA vaccine which has been used, they are self-degrading. They degrade within 7 to 10 days, and mRNA does not go and attach to the human DNA. That's completely unlikely. So, thank you. मुफ्ती साहब, ये बाज वैक्सीन ये ऑक्सफोर्ड वाले के बारे में खासतौर पे कहा जा रहा है कि वो जो है वो जनीन वगैरह के कुछ अज्जा उसमें शामिल हैं, क्या ऐसी कोई बात? जी, मैंने गो थ्रू किया डाटा से, तो उन्होंने इसकी प्रिपरेशन में उन्होंने मेंशन किया है कि उन्होंने यूज़ किया है, लेकिन उसके बाद ये भी पब्लिश्ड है और ये प्रूवन है कि जो अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन, यानी कि उसको इस तरह से उन्होंने प्रोसेस किया है कि वो वैक्सीन के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसलिए जब वैक्सीनेशन की जाएगी, वैक्सीन लगाई जाएगी, तो उससे इंसान के जिस्म में ऐसी कोई चीज़ दाखिल नहीं होगी, इसलिए इसका यूजेज में कोई इशू नहीं है दीनी हिसाब से, और ये जायज़ है। ये इसी पे हुआ है इस्तेमाल, लेकिन अब वैक्सीन में नहीं है। जी जी, वैक्सीनेशन के बाद हमें ये तो बात हमारी वाज़ेह हो चुकी है कि मोर्टेलिटी बेनिफिट होगा, इससे सब इत्तेफाक करते हैं, यानी कि अमवात में कमी होगी वैक्सीनेशन से। एंटीबॉडीज कितने अरसे में डेवलप हो जाती हैं? Dr. Karim, I think it's for you. So usually starting probably about 10 days, but realistically up to 3 weeks, you're going to get a primary antibody response. So we're going to have 2 vaccine doses with the current one, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, etc. They have 2-dose strategy. There are vaccines coming out which have a 1-dose strategy. So basically, after you've had the vaccine, you're not going to see any antibody production for at least the first 10 days. And then that's likely to peak between 10 and 21 days. So that's why, immediately after taking the vaccine, there is no protection. So it's not like you get out of the nurse's office or the doctor's office, you've had the vaccine and you can celebrate. It will take several days, as I say, before you start to produce those antibodies. जो नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, तो फिर ये वैक्सीन उसके लिए इफेक्टिव ना हो, तो फिर फायदा कि हम ये वाली वैक्सीन लगाएं, थोड़े अरसे बाद आप कहेंगे नया वायरस आ गया है, थोड़ा सा तब्दील हो गया है, इसमें म्यूटेशन हो गई है, शिफ्ट्स एंड ड्रिफ्ट्स हो रही हैं फ्लू की तरह, तो हम क्या हर वक्त वैक्सीनें लगाते रहेंगे? Thank you. I think this is a popular media related question. As a virologist, I get upset when somebody says strain. I'm more comfortable with somebody using the word variant. Strain का मतलब ये होता है कि जब virus tries to show some new biophysical properties. जहाँ तक we know as of now, like has showed earlier in a tree function, the coronavirus is so far, the SARS-CoV-2, the COVID-19 is from a branch, and it has not fallen off the tree and started a new branch, a new tree. It is still the same virus. Variants are bound to happen because these are replicating at a mad fashion. You're talking about in a human host per day. You're talking about billions of viruses, and there will be some variants, and some of these variants will escape and they may become more adaptive. I mean, they may bind more to the receptor. They may replicate better. It's just that how it works, and this is not something new. This has been happening for probably a million years. It's happening like that. So the bottom line is, why should we get vaccinated now? Because these mutants keep arising, and there may be a point at some point when the spike protein completely changes. We know there are 20 amino acids in the spike protein. जो हम लोग जो changes देख रहे हैं, जो variant South African, so Brazilian, or they are not replaced entirely the spike protein. They replace a part of the spike protein in terms of its function. So as of now, I mean, there is, although it's a small study, there is a reliable evidence to say it is these vaccines which are currently being used are effective against the current variants.
Now, as I said earlier, there might be coming at some point in the future when the vaccine may not be efficacious at that time. But all we need to do is, just like how we tweak this flu vaccine, we may have to tweak this mRNA vaccines. यूसुफ भाई आपको कुछ इसमें ऐड करना हो या खुर्रम को? नहीं, मेरे ख्याल में माशाल्लाह बहुत कंप्लीट आंसर है। बिल्कुल वैक्सीन न लगाए मुफ्ती साहब तो गुनाहगार होंगे, दूसरों को हमारी वजह से तकलीफ हो या हमारी अपनी जात की हमने हिफाजत न की हो। वले जैसा दिखाने का हक। जी, इसमें दो पहलू हो सकते हैं। एक तो है कि एहतियाती तदाबीर को अपनाना, जो मैंने अपने टॉक में जिक्र किया कि रिकमेंडेड है, मास्क पहनना, डिस्टेंस पे रहना, हाथ धोना, हाथ ना मिलाना, तो ये एहतियाती तदाबीर को अपनाना, तो वो तो मतलब ये कि हाईली रिकमेंडेड चीज़ें हैं। लेकिन दूसरा इसमें पहलू ये कि ये तरीका इलाज है, यानी कि वन ऑफ द वे कि आप ट्रीट हो रहे हैं। तो अगर कोई शख्स मतलब कि रिफ्यूज़ कर दे ख़ास तरीका इलाज को, तो उसमें ये तो नहीं कहा जाएगा कि वो गुनहगार है, लेकिन फुक़हा ने, उलमा ने इस एक पहलू को ज़रूर मेंशन किया है कि अगर सिर्फ एक ही तरीका इलाज हो और गालिब गुमान ये हो कि उसकी जान बच जाएगी, यानी मोस्ट प्रोबेबल है कि इसी तरीके इलाज से इसकी जान ज़रूर बच जाएगी या गालिबन गुमान है कि बच जाएगी, तो एक सूरत है कि अगर वो ना करे तो बाज़ या स्कॉलर्स के नज़दीक वो गुनहगार होता है। लेकिन चूँकि ये तो इवन डॉक्टर्स भी अभी तक ये, या कोई गवर्नमेंट भी ये नहीं कह रही कि हर बंदा ज़रूर लगाए, यानी कि इन्फोर्स नहीं किया जाता, ये रिकमेंडेशंस हैं, तो इसको ज़रूर सीरियसली कंसिडर किया जाना चाहिए। एक सवाल मैं पूछ लूँ मुफ्ती साहब से और आपसे सलीम भाई, इसी ज़िम्न में, वो शायद रेलेवेंट पाकिस्तान में सुनने वालों के लिए हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ये फैक्ट है कि जो चाइनीज़ वैक्सीन है, जो कि अब आज की खबर थी कि कल शायद कोई स्पेशल जहाज़ जा रहे हैं और वो पाकिस्तान में आ जाएगी कल परसों तक, तो उसके इंग्रेडिएंट्स पे काफ़ी मतलब शक व शुबहात हैं और शायद रहेंगे भी। मुख्तसरन कहूँगा, मैं चाइना एक दफ़ा मेरा जाना हुआ है, तो वो मुझे वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान मिल गए, तो उन्होंने मुझे ये बात बता दी कि आप जो है ना यहाँ पर वेजिटेरियन चीज़ें भी मत खाएं, क्योंकि जो पोर्क ऑयल है वो तो हर चीज़ में शामिल है तकरीबन 90% चीज़ों में, और एंड इट अपीयर टू बी द करेक्ट थिंग। लेटर ऑन जब मैंने उसको वेरीफाई किया तो वाकई उनके यहाँ ऑयल यूज़ ही वही होता है। तो मतलब कहने का ये है कि वो डेटा अगर नहीं आता तो फिर लोगों के ऊपर ये तो बड़े फंस जाएंगे बेचारे लोग जो हैं, अगर उनको चाइनीज़ वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफर कर रही है तो उनको क्या करना चाहिए? जी, जैसे मैंने जिक्र किया कि डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी रिलीजियस रूलिंग्स होती हैं, जो भी फतावा होते हैं या रिकमेंडेशंस होती हैं, जो कहा जाता है, उस पे डॉक्टर्स का डेटा पे वो रिलाई कर रहा होता है कि डॉक्टर एक्सपर्ट्स जो ओपिनियन देंगे उस पे वो रिलाई उनका कर रहा होगा। तो अगर उसमें यही कहा जाएगा कि अगर ये डॉक्टर्स इसको प्रूव कर रहे हैं या वो डाटा ही पेश कर रहे हैं कि इसके अंदर है, तो रूलिंग उसके मुताबिक होगी। तो उसमें यही है कि ऑल्टरनेटिव को देखा जाएगा कि क्या ऑल्टरनेटिव्स उसके बाद अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में भी कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं, तो फिर ऑल्टरनेट, यानी इन शॉर्ट ये कि ऑल्टरनेटिव्स को देखा जाएगा। हाँ, अगर बिल्कुल कोई सूरत है ही नहीं कि ऑल्टरनेटिव्स भी कोई अवेलेबल नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ अवेलेबल है, तो फिर ऑल टुगेदर सिनेरियो बदल जाएगा और उसके मुताबिक रूलिंग भी बदल जाएगी। लेकिन करंटली इस वक्त तो ऐसा महसूस, जिस तरह जिक्र किया, नहीं हो रहा। कि पहली बात है कि डाटा बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, एक्सपर्ट्स की तरफ से आना चाहिए, उस पर सारी रिलाई करेगी जो इस्लामिक रूलिंग है। तो सिर्फ शक व शुबहात और सिर्फ ये कि अक्सर ऐसा होता है या और अब भी शायद ऐसा हो, तो वो बात को उतना वजन नहीं देती। इसलिए इसमें इम्पॉर्टेंट है कि अगर तो ऐसा है तो उसका डाटा प्रोवाइड किया जाए, तो उसके मुताबिक उसकी रूलिंग पे देखा जाएगा, और फिर गवर्नमेंट को हो सकता है उसके मुताबिक गाइडेंस दी जाए और वो कुछ ऑल्टरनेटिव्स को की तरफ देखे। और जैसे मैंने जिक्र किया, पाकिस्तान में भी ट्रायल्स हो रहे हैं, तो हो सकता है वो उस पर नजर जाए और उसको फिर आगे किया जाए। और फिर ये कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बाकायदा उलमा से मशवरा किया होगा जिस हद तक वो कर सकते होंगे, या उलमा ने उनको कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन दी होंगी। एक तो ये कि हमें गुमान लोगों के बारे में अच्छा रखना चाहिए, ज़ुन्नु बिल मुमिनीना खैरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और असल चीज़ों में इबाहत ही होती है जब तक कि यकीन ना हो जाए कि वो हराम है या गलत है। तो अपने ख्यालात की वजह से परेशान किसी को नहीं लगवाना, वो ना लगवाए, जैसा कि हम मुस्तकिल यही कह रहे हैं, लेकिन सनसनी ना फैलाए, क्योंकि अगर उसमें उसकी वजह से किसी को नुकसान हुआ तो फिर वो उसका हिस्सा ना बने। बस आपको अगर लगता है तो ना करें, लेकिन
جب تک کہ حتمی بات نہ ہو تو اصل الاشیاء الاستباحہ جو ہے وہ قاعدہ سامنے رہنا چاہیے کہ چیزیں عموماً حلال سمجھی جائیں گی، اپنی استصحاب پر سمجھی جائیں گی، جب تک کہ ان کے بارے میں حتمی کوئی رائے نہ پتہ چل جائے کہ یہ حرام ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے پاکستان کی گورنمنٹ وہاں پہ الحمدللہ علماء کرام کا بہت اچھا خاصا انفلوئنس ہے، اور وہ بہت آسانی سے چھوڑنے والے نہیں اگر وہاں پہ مسائل ہوئے یہاں کی طرح ان کے ہاتھ بندھے ہوئے، الحمدللہ بہت آزادی سے اپنی بات کہتے ہیں اور لوگ ان کی بات سنتے ہیں۔ بلکہ پاکستان کی تو اعلیٰ مثال اس حوالے سے رہی کہ مساجد کے بند کرنے میں باوجود اس کے کہ ڈاکٹرز کا ریکمنڈیشن تھا کہ نہیں یعنی بند کر دی جائے، اور علماء کے کہنے پہ گورنمنٹ نے ان کی بات کو رکھا، اور یعنی اس کے فوائد بھی ہم نے دیکھے۔ فرسٹ ویو میں بات کر رہا ہوں، تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ وہاں کے علماء اپنی ذمہ داری سے غافل بھی نہیں ہے، اور گورنمنٹ بھی اس حوالے سے ذمہ دار ہے۔ یہ سیفٹی کے حوالے سے سوال ہے کہ پریگننس کو نہیں دے رہے ہیں، وہ ابھی ریسنٹ ڈیٹا تو یہ ہے کہ دے سکتے ہیں، لیکن اب تک کی بات یہ تھی کہ بچوں کو اور جو حاملہ ہیں ان کو نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ کیا سیفٹی کی وجہ سے ہے؟ اس سے ہمیں گھبرانا چاہیے کہ سیف نہیں ہے اس لیے نہیں دے رہے، یہ کہ صرف ڈیٹا موجود نہیں ہے؟ خیال میں یہ اس میں اصل میں یہ کامن لمیٹیشن ہوتی ہے کلینکل ٹرائلز کی کہ کچھ ایج گروپس کو جو ہے اوبویسلی اس میں انکلوژن کرائٹیریا اور ایکسکلوژن کرائٹیریا کو میٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہ بڑا نیچرل ہے، کیونکہ اس وقت جب یہ ٹرائل چل رہا تھا تو پریگننٹ خواتین بھی اوبویسلی عام طور پہ مطلب ینگر ایج گروپ ہے، اور بچے تو پہلے ہی ہمیں شروع سے پتہ کہ پوری دنیا کا ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ وہ اتنے زیادہ رسک پہ نہیں ہیں، نہ تو کیچ بھی کر لیں تو ان کو سیویئر النس نہیں ہوتی۔ تو آپ مطلب بندہ سمجھ سکتا ہے کہ وائی دے ور کین ایٹ دا ٹائم کہ اس گروپ کو ایکسکلوڈ کیا جائے۔ تو آئی تھنک اس سیفٹی ایکیوٹ سیفٹی کنسرن تو کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی رپورٹس آئی ہیں، لیکن یہ ڈیٹا موجود نہیں ہے فار دا ریزنز جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں پہلے بھی۔ تو اس وجہ سے غالباً ظاہر ہے کہ جب ریگولیٹری اپروول ہوتا ہے تو اس میں ان کو کوشس رہنا ہوتا ہے کہ وہ یہ کلیریفائی کریں کہ جو پیشنٹس انکلوژن کرائٹیریا تھا وہ کیا تھا، اس کے مطابق ریکمنڈیشن دیں۔ بالکل، اس سے تو ان کی احتیاط اور دیانت پتہ چلتی ہے کہ وہ جو رسک، جو ایسا گروپ کے جس میں رسک بھی کم یعنی زیادہ ہونے کا امکان ہو پریگننسی کی وجہ سے بچے کو جو یعنی حمل ہے، تو یہ اس میں احتیاط کرتے ہیں عام حالات میں، اور ذرا بڑی عمر کے لوگوں کو پہلے دیکھتے ہیں تاکہ ان کا ڈیٹا آ جائے پھر آگے چلیں گے۔ تو ایک مستقل عمل ہے، ایسے ہی چلتا ہے۔ یہ تو ہم بات کر چکے ہیں کہ اینٹی باڈیز کچھ عرصے کے بعد کیا لوز ہو جائے گی، اگر ہوگی تو کیا ہمیں ریگولر اینٹی باڈیز چیک کرانی چاہیے کہ نہیں؟ I think Dr. Khan has already mentioned this, that as of now, there are no tests to tell you specifically, well, you have responded to the COVID-19 vaccination. There are tests which can help us determine if COVID-19 infection has occurred in the recent past, but there are no tests for sure. There is a test which some of the commercial manufacturers have got CE marked approval, but these would simply tell you whether the COVID-19 vaccine antibodies may be there, but however, they will not tell you what the T-cell immune system is. The antibodies may have definitely gone to zero, but what about the T-cell immune system? From the coronavirus experts, and what they have been studying the immunology and the response of the other coronaviruses. I'm not talking about COVID-19 virus, talking about other like the 229E virus. And there has been a recent paper which has been just published last week from a very major study from Seattle, where they looked at antibodies to 229E, which is another coronavirus, from serum study from 1982 onwards. So it's a kind of a major insight, which shows that antibodies do fall, but however the T-cell immune response if the virus keeps coming back. So there is some evidence that the immune system remains intact, but however, I wouldn't recommend, to what we know now, to get an antibody test for after vaccination. یوسف بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ Yeah, at the moment, I mean, I agree entirely. There's no clinical guidance for people to have antibody checks at the moment. There's no clinical recommendation to do that. تو یہ پھر اگر آپ نے کہا تھا بھائی 3 ہفتے کے بعد سیکنڈ ویکسین ہونی چاہیے، اب انہوں نے UK میں بڑھا کے 12 ہفتے کر دی، تو یہ کیا گڑبڑ ہے؟ تو پہلا والا رسپانس ختم ہو جائے گا، یہ تو ایک پریشانی کی بات ہے۔
लोगों के लिए हो गई जो लोग वैक्सीन लगाना चाहते हैं। This is a super important hot potato, and we've discussed it. One of my colleagues here is a doctor called Dr. Patrick Tang. He's a Canadian doctor who was involved in the SARS-CoV outbreak tracing originally, and he's always on Al Jazeera. So if you Google him, Dr. Patrick Tang, T-A-N-G. I discussed it with him, and the bottom line is it's slightly odd, and it doesn't instill the public with confidence, but there's a reason that the government have done it. And the reason is that COVID-19 is so prevalent in the UK now. It's causing, as you know, so much illness and death that the government decided it's better to have more of the population have one dose and have some protection than half of that group have 2 doses and have better protection. So it's basically a pragmatic decision. It does go against, if we're always talking about regulatory approval, and the license of the vaccine is to have it after 3 weeks or 4 weeks, depending on the vaccine. And now we're going against the regulatory approval that's just been achieved. But it's taken, as we said, it's an emergency, this is an urgent situation. That's the reason. This way, we get more of the population with some protection than less with better protection. And it's a pragmatic decision. I asked him, he said to me that he thought if it went to 6 to 8 weeks, it probably wouldn't make a difference. We don't have any data for 12 weeks because none of the vaccines were given like this in the trial. But even for 12 weeks, the pragmatic approach probably does still apply from the government. और अब आप में से कोई कुछ कहना चाहे? जी, इसमें बस एक बिल्कुल कंप्लीट आंसर है माशाल्लाह यूसुफ भाई का। जस्ट टू से कि एक चीज़ ये है कि जो शुरू से जो कोविड जब से शुरू हुआ है, तो एक इसमें एक एडिशनल एस्पेक्ट है जिसमें साइंस यानी एक दर्जे में शामिल होती है, लेकिन ज़्यादा रिलायबिलिटी होती है स्टैट्स, रिलाई करते हैं स्टैट्स के ऊपर। तो बेसिकली जैसे मॉडलिंग कहते हैं, तो मैंने भी जो अपनी रिसर्च की थी उसमें कुछ हद तक मैथमेटिकल मॉडलिंग में मैं इन्वॉल्व हुआ था, अगरचे एक्सपर्टीज़ किसी और की थी। तो उसमें ये होता है कि आप जो है ना एक प्रेडिक्शन करते हैं बेस्ड ऑन प्योर नंबर्स। मतलब वो साइंटिस्ट जो हैं दे हैव नो मतलब उनकी कोई इंसाइट नहीं होगी वायरस क्या है, वायरस से क्या रिस्क हैं, वो RNA है, DNA, whatever, all that science, they have complete obliviousness of that। लेकिन उनका ये होगा कि वो नंबर्स को सिंपली इंजेक्ट करेंगे उसके अंदर, अपने मॉडल्स के अंदर। वो ये कहेंगे कि भाई अगर आपके आबादी लेट्स से कि 6 करोड़ आबादी है, तो उसके अंदर इतने % लोगों को जब वैक्सीनेशन होगी तो ओवरऑल जो आबादी है उसको रिस्क कितना होगा। तो अगर आप कंप्लीट प्रोटेक्शन देंगे टू अ प्रोपोर्शन ऑफ पीपल, लेट्स से कि आपने वैक्सीनेशन, ज़ाहिर है कि उससे हाफ एंड हाफ का फ़र्क पड़ रहा है ना, कि अगर आप उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर तकरीबन डबल लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो उसकी वजह से ओवरऑल उनका ये असेसमेंट था कि जो रिस्क होगा वापस से नए पीक्स के आने का वो हायर होगा। अब ऑब्वियसली ये रोबस्ट साइंस नहीं है, जैसे मैंने कहा, ये नंबर्स आपने जब देखा होगा शुरू में भी जो डेटा आए थे इंपीरियल से, तो वो हमेशा सारे एक्यूरेट नहीं थे। कई जगहों पर तो प्रेडिक्शन थी कि लाखों लोग मर जाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पर वहाँ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दैट वाज जस्ट बेस्ड ऑन मॉडलिंग। तो इस वजह से उसमें ज़ाहिर है कि ये एब्सोल्युटली ये कहना कि क्या होगा इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट, जो कि जैसे यूसुफ भाई ने बताया, there is some logic behind that। ज्यादा लोगों को एक मिल जाए बनिस्बत इसके कि आधे लोगों को पूरी मिले और आधे जो है वो फिर ज्यादा बीमारी का शिकार हो। ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी का इंतजार क्यों नहीं कर सकते, या हर्ड इम्यूनिटी का क्या फायदा हो सकता है, हमें कितना अरसा लगेगा? यूसुफ भाई जी, and this question has been asked to me many times, and a lot of people write about it in the newspapers, and the answer is herd immunity is what we want to achieve, but in this case we're going to achieve it by vaccination and some natural infection. If you rely on herd immunity to occur as a result of natural infection, there will be literally hundreds of thousands of people dead, because if you allow the virus to just spread unchecked, rampant, then all those people who are vulnerable will die. Now, yes, the young people and the people who are completely healthy will develop antibodies, but at what risk? The risk is that and we've already seen, even with the lockdowns and the measures that we've taken, we've had more than 100,000 people die.
Imagine if we just said, we want herd immunity. We'll just let the virus infect everyone, and then we'll get 70, 80, 90% immunity. Yes, you will, but you'll have literally hundreds of thousands of people dying. And our hospitals cannot cope as it is at the moment with the current illness rate and death rate. Imagine multiply that by many factors of multiples. So this is why we just can't wait for herd immunity to happen in a natural way. जज़ाकल्लाह। कोई और साहब उसमें कुछ कहना चाहें, ऐड करना चाहें? मेरे ख्याल में क्विकली सिर्फ ये है कि बिल्कुल एग्जैक्टली ऑन दोज लाइंस ऑलरेडी वी हैव सीन कि जिन कंट्रीज़ ने ये स्ट्रेटजी अडेप्ट की थी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, वहाँ पर भी अब बहुत इसकी मास डिस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। अगरचे कि याद रहे कि वो हमसे बहुत ज़्यादा, यानी यूके से भी, इवन कंपेयर टू यूके दे आर फार मोर ऑर्गेनाइज्ड, और मतलब वहाँ पे रिसोर्सेज भी बेहतर हैं, लोगों की भी जो डिसिप्लिन है बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर इन्फ्लक्स, मतलब यहाँ दायरा है यूके तो एक तरह से लंदन पर्टिकुलरली हब है, पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं, तो वो जनरली वहाँ पे स्कैंडिनेवियन लोग ही रह रहे हैं वास्ट मेजॉरिटी में। तो उसके बावजूद भी उन्होंने अपने SOPs टू अ डिग्री फॉलो भी किए। अगर आप पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज देखें, इट वाज नॉट एज इफ कि वो बिल्कुल ही यानी घूम फिर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन नहीं था, तो वहाँ पर हमने देखा कि आउटकम्स बहुत ख़राब हुए हैं। मतलब ये कि इसमें वक्त इतना लग जाएगा कि बहुत ज्यादा अमवात हो जाएंगी, तो इसलिए इस पे खाली डिपेंड नहीं कर सकते। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि अगर अक्सर पॉपुलेशन कोई बीमारी हो जाएगी तो वो फिर दिफाई मोड में चले जाएंगे। उसकी तफसील कभी और डिस्कस करेंगे जिनके जहन में कोई सवाल हो तो। 2-3 कंट्रोवर्सीज को भी ले लेते हैं ताकि लोगों के जो जहनों में कभी कभी होता है कि ये हमारे, इसका तस्करा तो हो चुका कि DNA को मॉडिफाई करेंगे, और बिल्कुल वजाहत से बता दिया था जावेद भाई ने कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये DNA तक पहुंचता ही नहीं, DNA तो सेंटर में पड़ा हुआ है और ये RNA वैक्सीन है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें कोई चिप वगैरह का जो सिलसिला है ये भी सब बेकार बात है, ये सब उड़ाई हुई बातें, ऐसी कोई बात नहीं। आप में से किसी को कुछ कहना हो उस बारे में? मुझे बस उसमें मशवरा वही देना था सलीम भाई कि जो चिप से ज़्यादा रिस्क जो है, अभी आज ही मैं देख रहा था कि फेसबुक के ऊपर एक्चुअली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जब आप ऑफ फेसबुक भी हो तो भी आपकी एक्टिविटीज़ ट्रैक हो रही होती हैं, जब तक कि आप उसको स्विच ऑफ ना करें। तो ये जो हमारे मोबाइल्स हैं, जो हमारे पास हैं, जो सोशल मीडिया है, दैट इज़ अ मच बिगर रिस्क। तो ऑलरेडी चिप्ड है आपका ऑलरेडी ऑलरेडी सारे चिप जी जी। और दूसरा ये कि अगर वो, मैं पहले भी एक दफ़ा कहा था कि अगर हम उस स्टेज पे आ गए हैं ना कि अगर 1 पाउंड या 2 पाउंड की वैक्सीन जो है वो इतनी स्मार्ट है कि उससे हमारे DNA की सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है बिल गेट्स तक, तो फिर मुफ्ती साहब बेहतर कहेंगे ये एंड ऑफ टाइम्स है। फिर मेरे ख्याल में हमें सर तस्लीम खम कर देना चाहिए। सही बात। ऐसा भी कोई मसला है कि इससे कोई नामर्दी हो जाती हो या औरतों में कुछ बांझपन आ जाएगा वैक्सीन से? बेकार बात है बिल्कुल। 5G नेटवर्क का क्या मसला है? किसी के जहन में हो उस बारे में कोई बात, कोई लतीफा? ये शायद कोइंसिडेंस हो कि उसी वक्त में इत्तेफाक से काम हुआ तो लोगों ने उसको आपस में रिलेट किया, कोई इसका ताल्लुक नहीं, सब बेकार बातें। ऐसी अफवाहों से अपने आप को बचाना चाहिए, जैसे मुफ्ती साहब ने बयान किया था। अब कोई सवालात हैं तो ले लीजिए। अरफात आप। जी, जज़ाकल्लाह खैर। काफ़ी सवाल का जवाब तो मिल गया होगा लोगों को। तो मैं 1-2-3 बाकी रहते हैं इंशाल्लाह। तो अगेन कंट्रोवर्सी थ्योरीज के कैटेगरी में आएगा ये जो FDA, CDC, WHO मेक मेडिसिन एज एन इंडस्ट्री, उनके डेटा पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। तो सवाल था कि इम्यूनोलॉजिस्ट ने क्या उनकी खुद की कोई रिसर्च की है जो काबिल एतबार हो? I didn't get किस बारे में? Basically they're saying, you know, all these big organizations, FDA, CDC, they try to make medicine as an industry. In other words, try to generate money out of it. So he was just wondering whether there's a collateral or a corroborative evidence from people whom they personally have met and spoken to, for example, yourself. Sure. I think it's fair for people to be suspicious and fair for people to have doubts, because the way in which certain pharmaceutical companies behave and the way in which, particularly in North America, medicine is so commercialized, I think it's fair enough to have these doubts. But if you look at, even in the UK, other countries, the hospitals, there are people who are, as we all know, who are genuinely suffering with COVID, who are genuinely ill or dying with COVID, and this is a genuine problem. And
although yes, I'm sure that pharma companies will be making money. I'm sure there are people making money. For example, with PPE, people have inflated the prices and made money out of this. So I'm sure there are people who are, making money out of this. But I think it's a genuine problem and it's a genuine answer. If we manage a conspiracy theory, if we take the CDC and FDA out of it, we would have to say that all the physicians in the UK and in Europe and in Qatar and in everywhere is involved in this conspiracy theory. And I can certainly say in the NHS that these people who are working on the front line and giving their heart and soul every day for their patients are not involved in this conspiracy. So I would reassure them in this regard. जज़ाकल्लाह खैर। I think वही मुतदिल आंसर है आपका। तो जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, जो एक क्वेश्चन था, जो any of the vaccines are impermissible for Muslim, तो मुफ्ती साहब, आपके रिसर्च में कोई भी फिलहाल जितने भी है out there who that are being supplied, क्या उनमें कोई भी impermissible है मुसलमानों के लिए? जी, जैसे मैंने जिक्र किया कि नहीं, अभी तक तो नहीं। जो मेरी रिसर्च है और जो मुझे डाटा है और जो जितना भी मैंने उसको प्रोब किया, ऐसा कुछ अभी तक सामने नहीं आया। तो जितनी भी वैक्सीनेशन आ चुकी हैं, उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको एक मुसलमान ना लगा सके। ओके, और एक सवाल था, पेट एनिमल से क्या कोविड वायरस फैल सकता है? आउट ऑफ द टॉपिक है, लेकिन अगर क्विकली जवाब दे दें तो लोग अटेंड करें सवाल, शायद एक सवाल के लिए। तो कैन समवन आंसर whether pet animals can spread coronavirus? In this, there has been some evidence where pet animals can acquire an infection. Whether they are good models to transmit an infection, that remains a question. And whether they can whether they serve as amplifier host is not known. But we know a lot of animals get infected. When you look at the CDC advice, they would say if you have a pet, and then of course try to wash your hands, and or the basic principles apply, because it's an unknown zone as of now. But it's not a major some kind of a transmission like when you compare to a human host who is COVID-19 positive. बहुत शुक्रिया, that even I didn't know that. अच्छा, और बच्चों के लिए कुछ वैक्सीनेशन आएंगे या जरूरत है उनको? I think Dr. Karim has already emphasized, and Mr. Khan has already emphasized, the trials they do not participate in pregnancy and children. Simply, it is unwise to start trials including these. But I believe, to my knowledge, Pfizer is doing a study now decreasing children from 16 years old to 12 years old. So there will be a very likely scenario when because we have to, the children at the end of the day, they would serve as cycles of transmission. So we do need a vaccine for children at some stage. And it's just that we need to test how safe the vaccines are in that. Until we have that evidence, I don't think anybody would be brave enough to say, fine, you go ahead and have it. There might be some scenarios like a case-by-case basis, like pregnancy and children, where the risk of they dying with COVID-19 may far outweigh having the vaccine. So in that case, the physicians might choose as a case-to-case basis on such individuals. तो वैक्सीन फिलहाल तो नहीं है क्योंकि टेस्ट नहीं हुई, लेकिन एक कंसोलेशन ये ले सकते हैं कि बच्चों में उतनी खतरनाक साबित नहीं हुई है जनरली। तो जो माँ बाप फिक्रमंद है अपने बच्चों के हिसाब से, वो उतने फिक्र होने की जरूरत नहीं है। तो ये भी इनको एक कंसोलेशन के तौर पे पेश किया जा सकता है। अच्छा, तो एक किसी ने सवाल किया था, उनको स्कूल में काम करती हैं और हफ्ते में 2 बार उनको क्या कहा गया है कि लैटरल टेस्टिंग जो किट दिया जा रहा है, तो उनका सवाल था कि कब तक कंटिन्यू किया जाए? The lateral flow testing has for many reasons become got caught in controversies, and I think it's beyond the scope of this topic to discuss the pros and cons of lateral flow devices. The government has got purchased 9 million LFTs. And let me be frank in saying that they had to use this somewhere now because the schools have been shut down. Primary schools have been open for key workers and as well as secondary schools. And the LFTs are
good tests for the community. They're not good tests for in-hospital patients. There is some narrow kind of a opportunity use in such circumstances. But I'm afraid that's the Public Health England recommendations, and I don't think we can deviate from that recommendation. And they are actually, by law, I think that's the law of the land. I think, I'm afraid, the teacher has to abide by that consensus. And at the end of the day, it's a simple test. It's not going to harm the individual, and it gives an answer within half an hour. And if they are positive, then of course they would have to do a PCR and stay at home until it gets confirmed. So I'm afraid they might have to, I know it's an unpleasant to put a swab inside a nose, but there you go. That's what Public Health England recommends. Thank you very much. अच्छा, एक काफी सवाल आए थे चाइनीज वैक्सीनेशन के बारे में. उम्मीद है कि क्लैरिफाई हो गए होंगे, काफी डिस्कशन हो चुका है उसके ऊपर, तो आई एम गोना स्किप दैट. तो इंडिया में फिलहाल 2 वैक्सीनेशंस आ रही हैं, इंडिया खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है. Neither of them have had any data published. एक तो ऑक्सफोर्ड का एस्ट्राजेनेका का ही मॉडल टाइप का है, लेकिन इंडिया में खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और दूसरा लोकल इंडिजिनस मैन्युफैक्चर भी हो रहा है. तो they haven't published any data yet. So can we extrapolate the data from other vaccinations for the Indian vaccination? So Indian जो participants हैं उनको क्या कहें? I will leave this to other 2 panelists to give their expert opinion. But all I can tell is, has a philosophy in science, never get ahead of science. We have to wait for the trials to complete. What has happened is there has crept into many of the minds among demagogues, vaccine nationalism. Vaccine nationalism creeping in India, even in UK, you can see there's a degree of vaccine nationalism. And it's an extremely bad idea. The vaccines might be safe. It's a gamble. No scientist is coming forward and saying that, well, we have seen deaths in this kind of a vaccine, so avoid. No, that has not been observed. But the problem is there is no data. So until we have the data, I don't think we can reliably say, go ahead and get a vaccine. I think I'm afraid I can't advise on that question. Wow, I can see both the other panels nodding their head, so I'm thinking they consensus on that. मगर उसकी वजह से काफी जो है मसला हो सकता है इंडियन में, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है ऑन द अनटेस्टेड, कंट्रोवर्सी तो है. सो आई डोंट नो इफ यू कैन categorically advise कि भाई ले या ना ले. तो I think we have to leave that to the individual judgment, I suppose, isn't it? कि गवर्नमेंट तो दे रही है. Individual judgment and ask their healthcare provider. जी. Okay, I think that's it for the. Let me just have a quick look at जब मैं collect करने के बाद से कोई अगर सवाल आया है यहाँ पर. Give me just 1 minute. अच्छा, put forward. Okay, कोई preference, one vaccine over the other? If you have an option, would you go with one and not the other? I can give you a practical answer to this question. So my wife is a GP, as I'm sure Anwar by knows anyway, and she gets asked this all the time. The bottom line is we don't have a choice. So wherever you are in the country, in the UK, and even where I am, we will be offered the vaccine that happens to be, at that time. And my answer would be, take whichever vaccine you're offered. Because if you don't take it, it may be months and months and months before you get the next opportunity. So we don't know that there's any significant difference between these vaccines yet in terms of efficacy or duration of antibody, persistence, or side effects. So if it was me, I would take whichever one I was offered, because it's at the moment there's no rationale or guarantee which vaccine is being offered. My parents received the Pfizer vaccine. In the county next door, they're receiving their AstraZeneca. So you can't predict which one you're going to be offered. Okay, that's very good. Zishan has asked about reinfection with other strains. That has been answered actually. There is a video available, inshallah. So, but for his benefit, I'm just thinking he'll have to listen to 2 hours of video. Quickly, एक answer दे दे तो उनके लिए अच्छा रहेगा. I think we discussed the reinfections are possible when new mutants arise, new variants arise. But at that time, when the new reinfection, and
I mean, even now, reinfections can happen. We are not saying no, but what we know is majority of those reinfections are mild. Very anecdotal cases of severe reinfections. But with new variants, there is be a possibility of retweaking the current vaccine. So I don't think I need to comment more on that beyond that. Yeah. Dr. Sameer Naik, I don't know if he's been answered. If you have any allergies, isn't it advisable for Oxford vaccine than the Pfizer one? I don't know what context was that. I think that's partly because initially with the Pfizer vaccine, there were several reports of severe allergy. And initially the guidance was that anyone with a severe allergy should avoid that vaccine. That guidance has been upgraded and revised by the BSACI, the British Society of Allergy and Clinical Immunology, so that it's only people who have allergic reaction or anaphylaxis to components of the vaccine should avoid it. So not patients who have general history of anaphylaxis. To be honest, I can't tell you the exact data between the AstraZeneca and the Pfizer in terms of allergies and anaphylaxis, but that was the basis for that original advice. Excellent. Jazakallah khaira. I'll hand back to Anwar Bhai to give vote of thanks and conclude. जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस छोटी सी काविश को कबूल फरमाए और हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स को खूब अजर अजीम अता फरमाए, जिन्होंने बहुत तहम्मुल से सुना, बहुत अदब से सवालात किए और इसी तरीके से हमारे मुकर्रिरीन को कि उन्होंने खूब तैयारी के साथ, बहुत एहतिमाम के साथ, बल्कि चंद एक का हमने थोड़ा सा वक्त ज़्यादा भी लिया। अल्लाह उसका अजर उनको बेहतरीन तरीके से दे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।